Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors. What were you waiting for? Certainly, for another 10 tools that I promise I'll be sharing the same with you. Am I right? Yeah, so another 10 tools I'm going to share with you. The first one is what is a good question. So discuss with the students what makes a good question. क्वेश्चन की क्वालिटी के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंगली इज इट अ गुड क्वेश्चन इफ इट्स अ गुड क्वेश्चन व्हाई इज अ गुड क्वेश्चन the questions that are open-ended questions, they are certainly good questions. Closed-ended questions, somewhat we feel they assess only the knowledge, assess the lower order thinking skills. So just, you see, encourage them to develop their own questions. For that, they require your supervision, they require your guidance, they require your mentorship. To discuss about that, book के exercise के जो कुछ questions होते हैं उनसे पूछिए इनमें से कौन से आपके अकॉर्डिंगली गुड क्वेश्चन है आप पूछोगे तो आप कैसे क्वेश्चन डेवलप करोगे तो इन्वॉल्व देम इन क्वेश्चन फ्रेमिंग right and then graphic organizers that should be a part of your teachers toolkit. I have shared more than 100 graphic organizers on my channel. Make sure you use them at as appropriate places for different age groups, for different subjects, for different topics as you feel like, right? And now next is KWL. We have been talking a lot about KWL. K, what they know, what they want to know for W, and then L, what they have learned. So we'll be discussing about KWL a lot in the upcoming videos too. And we have already discussed something about KWL, right? Recently also in the video that I have shared with you, I have already shared with you what is KWL. बच्चों को पढ़ाने से पहले पूछेंगे उनको क्या आता है टैबुलर फॉर्म में उनको KWL का फॉर्मेट दे सकते हैं क्या आता है क्या वो जानना चाहते हैं क्या उन्होंने सीख लिया है HP इसमें H लगा देंगे तो they will say how they have learned how they want to learn, right? So the same can be done. So next one is, see, variation extra column H, how will I learn? That can be done. So KWL. And next is talking partners. As a plenary or a starter, referring to the last lesson, आपने बच्चों को बोला एक lesson हमारा complete हो गया है. And now with the partner who is sitting with you, you need to share 3 things that you have learned. I mean, together they'll be contributing कि हमने क्या सीखा है 3 point. What they found easy, what they found difficult, and someone they would like to learn in future as well. So they make sure they should have talking partners. ऐसे वो उनकी learning enhance होती है. आप सोचे कि ये कैसी activities बता रहे हैं ऐसी activities करके वो जो they will be revising what they have learned. दे विल डिस्कस हम 4 जो सी हम यूजुअली बात कर रहे हैं 4 सीज की क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी वो एनहांस करते हैं वो फोस्टर करते हैं नाउ डेज वी वांट टू फोकस ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग सो दीज आर द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज where we want all the students to take part, right, and to take the onus of their learning. Now the next is post it. You can ask your students to post the notes on the display board, on window pane ki unhone what they have learned, what they found easy. I mean, that was a group activity. This also can be done either group or pair or individual, right? They can post it. Sticky notes you can use for it, and later you can collect and read at your home as your homework. You will be able to get to know कि उन्होंने क्या सीखा है. ठीक है? It will be easy for you to collect. And now response partners. इसमें क्या करते हैं हम बच्चों को रिस्पॉन्स पार्टनर्स एलोकेट करते हैं रैंडमली चेंज भी कर सकते हैं उसको राइट और मे बी 1 और 2 एक्टिविटीज के लिए सेम भी रख सकते हैं लेटर वी कैन डू इसको करना कैसे होता है कि आपके बच्चों ने ग्रुप में अगर सपोज ग्रुप की बात करते हैं ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट किया है कोई काम किया है आपकी क्लास में 5 ग्रुप्स हैं राइट सो आप उन्होंने वो अपना अपना जो प्रोजेक्ट है अपने अपने टेबल पर रखेंगे अपने ग्रुप में रखेंगे एंड देन one of them will be there on the table to explain to others कि उन्होंने प्रोजेक्ट क्या बनाया है और बाकी जो 4 स्टूडेंट हैं they will be going to the other 4 tables ताकि वो उनका वर्क देख कर आएंगे और वहां पर they will be able to give the feedback उस प्रोजेक्ट के बारे में राइट कि how the same has been done, how it could be improved, some other points can be given, right? और आप अपने टेबल पर एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहीं खड़ा रहेगा because you have to explain the work in case another person they are having any question they will be asking
कि इस प्रोजेक्ट में कैसे बनाया है, हैव यू रिसर्च, और व्हाट यू शुड बी देयर टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट? सो रिस्पॉन्स पार्टनर्स में जो होता है कि अगेन वी आर फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग. Make sure you use the same in the class. And another strategy is hands down. I have already shared with you no hands policy, no hand raise policy. That for that video is there on my channel. I'll be sharing the link also with you all on the I button. आप प्लीज आप देखिएगा कि हम क्लास में हर बार बच्चों को ये बोलना कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है वो तभी हाथ खड़ा करें कि मुझे ये समझ नहीं आया. अदरवाइज देर इज नो हैंड रेज पॉलिसी कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा नहीं कि जिन बच्चों को आंसर आता है वही हाथ खड़ा करेंगे एंड यू विल बी टेकिंग आंसर्स फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स, राइट? नो हैंड रेज पॉलिसी. यहाँ पर और कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आपको पता है व्हील्स ऑफ नेम्स है, classTools.net है, आप उसके ऊपर रैंडम व्हील यूज कर सकते हैं बच्चों को पूछने के लिए, या ऐसे इस तरीके से पॉप्सिकल्स या ये स्टिकी बनाकर बच्चों के नाम लिख के यू कैन पिक अप एंड यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. और उसके बाद में है गुड क्वेश्चन स्टेम्स. You have to give good question stems to your students. In that, what they have to do? बच्चों को बोलो कि आपको questions in STEM के through develop करने. Why does this happen? What if? How would you do in that particular situation? Could you explain dash what might? So these stems would foster their thinking and they would be able to give you such kind of idea. Responses जो होंगे उनके वो open ended questions के accordingly होंगे, right? तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टेम्स यूज करेंगे. क्वेश्चन स्टेम्स में बच्चों के क्वेश्चन डेवलप करने की स्किल भी जो है वो एनहांस होगी. बच्चों को बोलेंगे कि इन क्वेश्चन स्टैम्प्स को यूज करके दे विल बी फ्रेमिंग गुड क्वेश्चंस, राइट? एंड नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज रेगुलेटिंग लर्निंग. इन अ क्लास you have to keep on moving when the students they are involved in different kinds of activities. It's not like that you are supposed to stand at one corner and children they are doing some activities. You need to keep on moving. आप जब मूव करोगे क्लास में you will be able to see कि कहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है. You will be able to facilitate the process. You will be able to help them out. और यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि किस तरीके से वो कोलैबोरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं अराइज हो रहे. या मे बी बहुत बार क्या होता है ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक बच्चा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एक बच्चा डोमिनेट हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू facilitate their learning in a work in a collaborative environment, right? So make sure you keep on intervening also wherever it is required. So the last strategy for today is ABCD. Now what is this ABCD? आपको क्या करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम बच्चों से पूछते हैं, लाइक यू सी बच्चों को एग्जाम में अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे 30% जो उनसे पूछे जाएंगे. एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में 30% है और दूसरे में 40%. यू नो फॉर डिफरेंट क्लासेस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू द न्यू एग्जाम पैटर्न ऑन माय चैनल. यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे उसमें आप क्लास में सारे बच्चों को इन्वॉल्व भी करना चाहते हो. एंड आप एक क्वेश्चन एक ही बच्चे से नहीं भी पूछना चाह रहे हो कि अगर मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगी क्लास में, मैं पूछूंगा क्लास में, उससे क्या होगा कि सबकी टर्न नहीं आएगी. तो आप अगर बच्चों को रिस्पॉन्स कार्ड्स ऐसे सपोज मैंने ये 4 बना लिए, ABCD लिख दिया इनके ऊपर बड़े बड़े बना, ठीक है? तो मैंने बच्चों को दे दिया एंड आई विल से कि इन अ ग्रुप यू विल बी सिटिंग और व्हेन आई विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन तो आपको उठा के ये दिखाना है कि क्या उनका रिस्पॉन्स है. एंड यू हैव टू मेक देम सिट लाइक दैट दे शुड नॉट बी एबल टू सी ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज. तो आपको क्विकली पता चल जाएगा कि किसका क्या गलत है एंड यू विल नॉट बी गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट. इसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे. ABCD 4 ऑप्शंस के क्वेश्चंस हैं, राइट? 1 2 3 4. तो यू विल बी एबल टू गो ahead with that. So this was the last strategy for today. Do hit the like button if you like these strategies and you are going to use them in your class. And I would be waiting for your responses. Like, how was it? How did you feel conducting such kind of activities in the classes? Or if you are already doing, do share with me also, like you have been conducting such kind of strategies in the classes, right? Subscribe to the channel so that you will be get notification for the upcoming videos. Thank you. Have a nice day from Meenakshi Nirula. Bye-bye.